Welcome. Let's start with our top story this hour. The Prime Minister of India has addressed the India-EU summit via video conferencing today. The summit is aimed at strengthening the ties between India and the European Union on a number of issues and areas such as trade, defence, investment, among other things. President of the European Council, Charles Michel, and President of the European Commission, Ursula von der Leyen, are heading the EU delegation during the summit. Prime Minister Modi said that the European Union is the natural partner of India and has called for human-centric globalization during the virtual address. एक्सेलेंसी नमस्कार। कोविड-19 के कारण हमें मार्च में इंडिया ईयू समिट स्थगित करनी पड़ी थी। अच्छी बात है कि आज हम वर्चुअल माध्यम से मिल पा रहे हैं। सबसे पहले मैं यूरोपीय कोरोना वायरस के कारण हुई क्षति के लिए संवेदना प्रकट करता हूं। आपके शुरुआती रिमार्क्स के लिए मैं आप दोनों महाशयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी तरह मैं भी भारत और ईयू के संबंधों को और विस्तृत और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इसके लिए हमें एक दीर्घकालीन स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ एक एक्शन ओरिएंटेड एजेंडा बनाना चाहिए जिसे निर्धारित समय में कार्यान्वित किया जा सके। भारत और ईयू नेचुरल पार्टनर है। हमारी पार्टनरशिप विश्व में शांति और स्थिरता के लिए भी उपयोगी है। यह वास्तविकता आज की वैश्विक स्थिति में और भी स्पष्ट हो गई है। हम दोनों ही डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म, inclusivity, respect for international institutions, multilateralism, freedom, ट्रांसपेरेंसी जैसी यूनिवर्सल वैल्यूज शेयर करते हैं। कोविड-19 के बाद आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसके लिए डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। आज हमारे नागरिकों की सेहत और समृद्धि दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर विभिन्न प्रकार के दबाव है। ऐसे में भारत ईयू पार्टनरशिप आर्थिक पुनर्निर्माण में और एक मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित ऑर्गेनाइजेशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तत्कालीन चुनौतियों के अलावा क्लाइमेट चेंज जैसे लॉन्ग टर्म चैलेंजेस भी हम दोनों के लिए ही प्राथमिकता है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने के हमारे प्रयत्नों में हम यूरोप के इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का आमंत्रण करते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वर्चुअल समिट के माध्यम से हमारे संबंधों को गति मिलेगी। Our principal diplomatic correspondent, Siddhant Subal, has sent us more on this. Yes, when it comes to the COVID crisis, this is something that was a top priority of the summit. In fact, it was one of the top agendas at
the virtual summit with the Indian Prime Minister, talking about how India was able to form a national strategy and of course a regional strategy as well. He highlighted how India gave medicines to 150 countries. We know that HCQ is something that India was the biggest supplier, and the European leadership also lauded the role played by India when it comes to dealing with the COVID crisis and its international response as well. We know that both India and the European Union have been severely impacted by the COVID crisis. Right now, of course, India, which has the third largest number of people impacted by the COVID virus, and of course European Union, they were in fact epicenters. Italy, Spain, these were the main epicenter of the COVID crisis, and both sides are now working on research on making sure that there is a vaccine. Summit, and as well we know that if we look at the material which was provided by the European Union and of course the releases provided by India's Ministry of External Affairs ahead of the summit, they also talked about how COVID is something that will be the top focus. In fact, the Indian Prime Minister mentioned that democracies should come together to deal with the COVID crisis, especially when it comes to post-COVID recovery. So that is something that not only talks about the COVID crisis, but also how the Indian Prime Minister views the world when it comes to democracies coming together. And of course, this is a message to Beijing as well. In fact, one thing I can tell you that India had supported a joint Australia-EU draft at the World Health Assembly, the main body of the World Health Organization that met earlier this year. And that draft, which of course has been adopted now, talked about finding the zoonotic source of the COVID virus. So that is something that it has been highlighted by New Delhi. And of course, European Union has been appreciative of the step taken by the Indian government. So there were convergences in the summit. There were focuses on the areas where both can work together. And of course, the other key issue remains FTA, which is something that